सिंग है कोई, मतलब सून आई विल. Okay, good morning everyone. So in the last class we did talk about what is a function, and that is as a special case of a relation. And then we using the arrow diagram, and then otherwise we found the method, in fact, for finding out the domain and range of a function. Today I'm going to talk about the graphs of such functions. We begin with the identity function. As the name suggests, identity. So there is a function fx equal to x. So y equal to x type of a function. This is the way we write. F is a function from R to R such that fx is equal to x. So this is the definition. And remember, we say generally y is equal to fx throughout. That is, now in this case our function is actually y equal to x, and this function is known as identity function. Now there are 2-3 important things which we need here. First thing, we need to graph it, and second thing, we need to find its domain and range. As far as the codomain is concerned, that is always fixed. So can anyone answer what is the codomain here? This second thing. Yes, Hanji, chalo. And the first one is always domain. For a function, these two things are always fixed if it is given in the question. And what exactly we mean by the domain? In simple word, already I have considered domain is actually what all values x can take. And range basically is what all values f of x, that is your function y, can take. fx को तो हम y कह रहे हैं, so what values y can take, that will be the range. So in journal you will observe very soon, finding out the domain is not a challenge. Codomain will be generally given. It will be mainly about the range. To find out the range, there will be generally two approaches. One is the graphical approach. The second one is the algebraic approach. Graphical approach is good, provided you are able to graph the function. But yes, there will be many functions which you cannot graph easily without making use of some software program. In my next class, I will be using one or two software program, the offline and online mode, and I'll give you the demonstration that how using those software programs you can actually get fair idea about the graphs of such functions. To graph this function, identity function y equal to x, let us prepare this table. So we know if y is equal to x, so of course -2 comma -2, -1 के ऊपर the value is -1. When x is 0, of course your fx, or that is y, that is 0. When we plot all these points, we have the following graph of this function. We just use the arrow lines, and this is the graph of the line y equal to x. So this is a line which is inclined actually at exactly 45 degrees. That is just for your knowledge, though we will be learning the methods how we can find out the inclination of that line. But as of now, just for information, that this angle is 45 degrees. So this is the line y equal to x. Now, based on your understanding, what is the range of this function? Domain, I'm sure everyone is clear. Domain kya tha? Domain.
what values x can take. तो आप चेक कर सकते हैं x can take any, not only integer. Do remember, just for a sake of simplicity I have chosen the integral points, but otherwise even if x is say minus 1 by 2, y will be minus 1 by 2. When say x is say root 2, y will be root 2. So all real numbers is my domain, which is already mentioned over here. This is mentioned over here. So domain is very obvious. What values x can take. तो ग्राफ के ऊपर x यहाँ है, तो x can take any real value. Now let us talk about the range of this function. What is the range of this function? ग्राफ को देखकर can anyone analyze what values y can take? Anyone? Y is here. Yes, real number. Y is here, and as here we observe exactly the same values are being chosen. So the range of this function is also R. Ultimately, you have to learn certain domains and range for these standard functions, though you can easily get them using the graphs. Next function is the constant function. As the name suggests, if say C is some fixed real number, then the function f from R to R such that f of x is equal to C. That is known as your constant function. So if I get the table of this, we clearly observe this is a one particular example for fx is equal to 2 से हमने क्या करा है c की जगह 2 ले लिया है to show the graph of this function. Now what will happen actually in this case? I haven't taken the table, but one can easily understand. If this is your x, this is your fx, x can take any value, say minus 2, minus 1, 0, 1, 1 by 2, minus yeah 4 ले लिया, whatever. But to observe that answer is fixed. Function is always 2. तो ये तो 2 के equal ही रहेगा. And when you plot these points, you will get a straight line like this. ये easy observation है. So this is the graph of a constant function. अब ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन सिर्फ ये नहीं होगा, मैंने तो 2 के इक्वल लिया था, हो सकता है दैट इज से y इक्वल टू -1 की बात होती तो डेफिनेटली ये यहां से जो लाइन निकल जाती, सो दैट विल गिव यू द कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू -1. Now, what is the domain of this function? Very obvious. ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये तो डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा. What about the range of this function? Range क्या है? Think logically. Answer will be always fixed. What values your answer can take, that is a fixed value, which is in our case is say C. So range of this function is the singleton set containing the element C only. Next, we'll be talking about a polynomial functions. And in case of polynomial function, let us initially define what is a polynomial function. A function of the form
a naught plus a1x plus a2x square and so on till an x power n, where n is non-negative integer, and a naught, a1 and so on, they are all real numbers. For example, let us start with a very simple quadratic function. This is the quadratic polynomial. Fx is equal to x square. So the function f is defined from R to R such that f of x is equal to x square. So this is a quadratic function. Anyone aware of the graph of this function? X square, you did in grade 10th Parabola. itself. Yes, it is actually a parabola. And to get the fair idea, let me consider few values of x. And when x is minus 2, put x equal to minus 2 in the definition. Minus 2 ka square is 4. Similarly, x is when minus 1.5, it is 2.25, and so on. So we'll get, and we have calculated it for few values of x only. Do not forget, infinitely many real numbers are there. So when we get the values and using a software program, we will get a smooth curve like this. Manually getting the values is impossible. Do remember that. So this is graphed using some software program only. So you just need to learn the basic shape of this function, which is a parabola. We did talk about the same in class 10th itself. So ये आपके पास actual में upper parabola है. Later we will be talking about the downward parabola, whose equation will become minus of x square. Then we will be talking about the right parabola, whose equation is say y square is, अगर जनरल कहूं तो 4ax हो जाएगा. और अगर मैं लेफ्ट पैराबोला की बात करता हूं, this would be minus 4ax, where a is some positive quantity. So we will be talking about all these graphs later on when we'll be discussing the parabola particularly in second semester. But अभी की जो हम बात करेंगे वहां only the graph like this and its mirror image is important for us. So learn the basic shape as a parabola, and now looking at the graph, what is the domain? Or otherwise also, without graph also one can easily tell me the domain. So what's the domain? यहाँ definition से ही हमें पता है, ये जो लिखा है that is always domain, ये जो लिखा है that is always codomain. ये तो रट लो, this is a common thing, right? Main is about the range. So what about the range of this function? Positive real number. No. Can your answer be -1? Y जो है आपका fx, can that, yes? Sir, R square. R square is not, no. Voice lag हो रहा है आयुषी. Positive real number, I mean that is what you wanted to say. Yes. आप चेक करिए. This is the required answer. Range जो है, this is x is always positive. How come? Look at the yellow portion of the graph. ये ग्राफ नीचे की तरफ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ना ही यहाँ है ना ही यहाँ है. इसका मतलब व्हाट वैल्यूज योर आंसर इज टेकिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड y सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, which refers to as the positive values from 0 to infinity. And range is nothing but what values your function can take.
Remember that basic definition. The closed 0 and up to infinity. Your required answer. I hope the idea is clear. बाकी एक दो और फंक्शन करेंगे. It will be much better than only. Consider this. Another polynomial function I have considered. F from R to R. F of x is equal to x cube. Right. So consider x cube. Quickly check out the table. Again, some software is used to get, say, certain values, though it is not difficult to get these values. But remember, there are infinitely many x over here. So I could have calculated this at say 1.6, 1.92, minus 1.8, and so on. So there are infinitely many values x can take. So it is practically impossible to get the value of the function at each and every point. Therefore, what we do, we calculate at say few points to get the rough idea about the shape of the function and then learn its basic shape, so that ultimately the job is for the graphs, the software programs, which is not in our CBSE curriculum. Right, in IB curriculum definitely, या जो फॉरेन में हम बात करते हैं वहाँ emphasis होता है on the graphical representation using the softwares. But यहाँ पर हम जो बात करेंगे एक basic fundamental idea लिया, and then this is the graph of the function. You just need to learn, and if I draw it in a nice better way, actual में graph थोड़ा ऐसे जाएगा, ये और ये. So this is the graph of the function y equal to x cube. For examination purpose, you don't need at all to draw the table or consider the table. You just need the basic understanding so that whenever it is x cube, you can easily graph this. और ये infinity तक जा रहा है, ऊपर भी नीचे भी, ये याद रखिए बस. So this is the graph of the function x cube, which always, of course, passes through the origin. Now look at this graph and answer. What is the domain? Quite obvious. Clear है, domain तो आसान है बताना, वो fix है. Domain is ये. So this is the domain, and this is the codomain, and main raha range. Anyone, what is the range of this function? ग्राफ को देखकर, yes, good, that is a real number. आप चेक करिए, रेंज मैंने अभी बताया, what values your answer can take. Answer can again take any real values. और अगर वही चीज ग्राफ पे देखें तो ग्राफ मेरा y एक्सिस के ऊपर नीचे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर भी कर रहा है, and that too up to infinity. Right? Yes, Nikunj. So the range of this function would be real domain. ग्राफ से विजुलाइज कर लिया, टेबल से विजुलाइज कर लिया, वंडरफुल. एंड दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न एट द एंड ऑफ द डे. मेन ये कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए, याद रखिए. Now we'll be talking about rational functions. What are the rational functions? The functions of the type fx upon gx, where fx and gx already they are our polynomial functions. Definitely the g of x should not be a zero function, zero polynomial. We will be taking the graph of function fx is equal to
1/x। तो fx को 1 ले लिया कांस्टेंट फंक्शन, और x ले लिया यहां पर, तो 1/x। तो अब आपको जब इसका ग्राफ और फिर डोमेन रेंज पूछा है, तो कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू 1/x। तो दिस इज वन पर्टिकुलर एग्जांपल। चेक करिए, बाय डेफिनेशन जो है फंक्शन कैन बी ऑफ द फॉर्म एफ एक्स ओवर जी एक्स। क्या मतलब, से x माइनस टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री है, या मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस वन है, समथिंग लाइक दैट। So there are infinitely many possibilities for a rational function. We will not take such complicated graphs in our syllabus. हम जो बात करेंगे सिंपल फंक्शन ले रहे हैं, एंड दैट इज इन फैक्ट 1/x, सो विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल फंक्शन। 1/x है ना, तो दिस इज ऑल्सो रेसिप्रोकल फंक्शन। Check out the table of the reciprocal function for few values of x. अगर x है -4, तो चेक करिए 1/-4 आ जाएगा। 1/4 होता है 0.25, आ गई ये वैल्यू। सिमिलरली यू कैन कंसिडर फ्यू मोर वैल्यूज, एंड एक और वैल्यू पे चलो चेक करते हैं, जैसे ये है -0.5, 1/-0.5 है, तो ये -1/0.5, और ये कितना हो जाता है 1/0.5 की बात कर रहे हैं, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 5 विच इज एक्चुअली 2, और माइनस साइन रह गया लगाना, सो ये माइनस भी आएगा साथ में, राइट। सो वी हैव द वैल्यू एज -2। Similarly, for few more points, say I have got these values of 1/x. अब हम इन सभी वैल्यूज को जब ग्राफ करते हैं, then we observe that the graph of the function is something like this. So this is ग्राफ कैसे जा रहा है, यहां जा रहा है, और एक ग्राफ का पोर्शन यहां जा रहा है। बट विद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये लाइन जा रही है, ये दिस नेवर मीट्स वाई एक्सिस and never parallel to this, so neither intersecting nor parallel. Same way यहाँ पर they are neither parallel nor intersecting. So you just need ultimately to learn the graph of this function. Now comes the question, what is the domain of this function? डोमेन का मतलब व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, ये डेफिनेशन थी, तो ये कॉमन सेंस की बात है। क्लियरली x कैन नॉट बी 0, तो अगर x 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, एंड देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r-0, which is already here. ये डोमेन होता है, this is codomain. Now coming to the range of this function. रेंज का मतलब y क्या वैल्यू ले सकता है, तो आप सोचिए अगर फंक्शन मेरा 1/x था, y इक्वल टू 1/x है, इससे हम x को लिख सकते हैं 1/y। अब क्लियरली y अगेन कैन नॉट बी 0, y 0 नहीं हो सकता का मतलब y can take any value other than 0. So that is the range of this function. So my function is not defined at only 0. Any doubt in this?
क्योंकि यहां से अब थोड़ा और लॉजिकल चीजें स्टार्ट हो रही हैं। और बट कंसेप्ट वही है, डोमेन व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, रेंज व्हाट वैल्यूज y कैन टेक। y का मतलब व्हाट वैल्यूज आवर फंक्शन कैन टेक। तो फंक्शन अगर अब आप ध्यान से देखें ग्राफ के ऊपर, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ जो जा रहा था वो ये जा रहा है, ये ऐसे और ये जा रहा था। ऑफ कोर्स ये कभी भी जीरो के पास नहीं आया है, इससे यहाँ ऊपर रहा और यहाँ नीचे भी वैल्यूज ले रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकता है एक्सेप्ट जीरो। तो ग्राफिकली ऑल्सो वन कैन अंडरस्टैंड दिस। Next, we'll be talking about the modulus function, absolute value function भी कहते हैं इसे, and that is the definition of the modulus function. Modulus function एक ऐसा function है, imagine करिए सिचुएशन x कुछ भी वैल्यू ले रहा है, आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, बिफोर आई डिफाइन और टॉक अबाउट दिस फर्दर, what is minus x? Is it positive or negative? Minus x. Negative. Okay. Anyone else? In fact, that is a general misconception कि माइनस एक्स को देखते ही ये लगा कि ये नेगेटिव होगा। थिंक अबाउट द एक्स, व्हाट इफ एक्स इज say -2? So this expression will become positive, right? तो माइनस एक्स को देखकर हम क्विक डिसाइड नहीं कर सकते कि दिस इज नेगेटिव। It all depends on the value of x. If x is positive, then of course minus x is negative. But if x is already negative, then it will be positive. तो हमें आंसर जो मॉडुलस की डेफिनेशन है वो क्या होती है कि आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो ऑब्वियस था, व्हेनेवर एक्स इज पॉजिटिव आंसर इज पॉजिटिव। बट व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो सोचो अगर ये नेगेटिव है और फाइनल आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको उसे बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इफ एक्स इज नेगेटिव, देन minus x will become positive. So that is the basic definition of this function. And for example, मान लो मैंने कहा mod of -3 बताइए, the answer is 3. Mod of -1/2, 1/2. 1/2. Mod of 5 is 5 only. Say mod of 0 is 0 only. Mod of -√2 is √2. तो फाइनल जो मेरा आंसर है दैट इज बाउंड टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। हम यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हेयर। सो लेट अस गेट द टेबल फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x। इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव होना ही था। नाउ व्हेन यू ग्राफ ऑल दीज वैल्यूज, चेक आउट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। पॉइंट्स देखो हमने क्या लिए, -3, -3। पहला पॉइंट ये है, तो कहीं पर यहां होगा -3, 3। तो -3, 3 ये रहा। नेक्स्ट -2, 2 इज दिस। नेक्स्ट -1, 1 वो ये पॉइंट आ जाएगा। देन 0, 0, फिर 1, 1, 2, 2,
3,3, 4,4, and so on. So you have a basic idea when you join all these points. I hope the idea is clear. V-shaped curve is actually your modulus function. Now looking at the graph, what is the domain and range of this function? डोमेन तो ऑब्वियस था. डोमेन, what values Real x can number. take? Real Real number. Yes, ये रहा डोमेन. What about the range? Positive real number. Positive number. Yes, good. Positive real number. Yes, non-negative real numbers. Good. तो उसे हम ये कहते हैं ना. तो चेक करिए, एक्स स्क्वायर में भी सेम रहा था रेंज, क्योंकि उसका ग्राफ भी रिजेंबल करता है समथिंग लाइक दिस, बट वो एक कर्व होता है. ये आपकी स्ट्रेट लाइन से बन जाता है. सो इन बोथ द केसेस द रेंज इज 0 to infinity. ये आपको याद होना चाहिए. और ग्राफिकल विजुअलाइजेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Check out the next function referred to as a signum function. अब ये named function है, special kind of a function, signum function. एंड नोटेशन में अगर बात करूं तो ये एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जाता है. तो सिग्नम फंक्शन is a function from R to R such that this is the definition. Whenever x is non-zero, the answer is x upon mod x. Non-zero का मतलब क्या होता है? या पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Both the cases, answer is x upon mod x. Or when x is 0, in that case the answer is fixed as 0. The same function may be simplified as follows. Simple definition में अगर बात करूं, you can use this definition also. Whenever x is positive, answer is 1. Whenever x is negative, answer is fixed -1. And 0 के ऊपर answer is always 0. Yes, so when I graph this function, अच्छा इस फंक्शन को ग्राफ से पहले a question. What is the value of f of -3? Anyone? -1. Whenever x is negative, answer is fixed -1. What is f of √2? 1. It's 1. वह मैंने पॉजिटिव लिया है x को. √2 is 1.414 approximately. Whenever x is positive, answer is 1. ये तो obvious था. f of 0 is 0. So based on this, the graph of this function is given by this. सर हम कोई भी वैल्यू देंगे एफ एक्स की तो उसकी वैल्यू यही +1 या -1 से आएगी या 0. यस, आप सोच के देख लो. आप f ऑफ मान लो मैं कहता हूं -1/2. नेगेटिव वैल्यू है, x इज नेगेटिव. उस केस में आंसर तो फिक्स बता दिया है -1. मान लो f ऑफ 5 निकालता हूं. Whenever x is positive,
5 इज पॉजिटिव वैल्यू, बट आंसर डिफाइन कर दिया गया है फिक्स्ड इक्वल टू 1. सो व्हाट डज दैट मीन? डोमेन इज रियल, और रेंज अगर आप यहां ध्यान से सोचें, what values your answer can choose. Answer, as you have just rightly pointed out, सिर्फ -1 हो रहा है, 1 हो रहा है, या 0 हो रहा है. So the range of this function is set containing only these 3 possible values. And when I look at the graph of this function, sorry, 0 के ऊपर तो आंसर 0 है, एक तो इसको हाईलाइट कर दिया. और when x is पॉजिटिव, याद रखिए x पॉजिटिव यहां पर है, यहां है x पॉजिटिव. तो पॉजिटिव अगर x है तब आंसर है 1. 1 का मतलब ड्रॉ द लाइन ऑफ y इक्वल टू 1. ये पूरी लाइन आ गई, चलो. बट इसमें से हमें इस लाइन का कौन सा पोर्शन लेना है? जब x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव सिर्फ यहां रहा है. एंड ये होल का मतलब मैं बता चुका हूं, ये ब्लैंक देने का मतलब क्या है कि इस केस में x पॉजिटिव था, इक्वल टू 0 नहीं था. 0 के ऊपर तो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं. सिमिलरली लास्ट थिंग, इफ x इज नेगेटिव, तो आप सोचिए x जब नेगेटिव है, नेगेटिव x यहां होता है, उस केस में वैल्यू इज -1. तो ग्राफ किसका लेंगे? -1 का. बट इसके ऊपर भी क्या हुआ है? 0 एज अ एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए यहां पर होल आएगा. सो अंडरस्टैंड दीज ग्राफ्स. डेफिनेशन को सोचिए ध्यान से. Any doubt till this step? चलिए, I'm ending the class then. Practice these graphs. Have a great day. You can leave the meeting now.